हो गया ना? हाँ. Okay. So hello, hey there everyone. Good evening. Very warm welcome to you all in this AI webinar with Avishkar. In this webinar, we are going to learn about AI, what is artificial intelligence, how we can use it, how we can create different products with AI, and what are the types of AI, how to use it, what is the benefit of it, and all of that. ओके सो अगेन आज के इस जो वेबिनार में हम लोग एआई के बारे में सीखने वाले हैं. हम लोग ये सीखेंगे किस तरीके से वी कैन क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आविष्कार के एएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू फीचर ऑफ एआई. हाउ वी कैन यूज दैट टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स. हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एंड डिफरेंट चीज़ें. एआई के टाइप्स कितने होते हैं, किस तरीके से एआई को यूज़ करा जा सकता है, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग to that I will like to wait for few more students, few more participants, few more learners to join in. So currently we have 30 students. I request them all, whoever is watching, please write down your name along with your age in the chat section, and so that I can know you better and I can understand and give you relevant examples. So basically आपको अपना नाम लिखना है comment section में, live comment में, live chat पे, with your age, so that I can connect better with you. Okay, so I'm going to read my comments. I will not call them on, but yes, I will be waiting for your comments. So please start commenting. Very good. I have received the first comment. Shivkar, 11 years, 11 years. Ayush Samuel, 33. Vihan. Lakshmi ma'am is also there. Hi ma'am. Vihan, 10 years. Samuel, Ayush, Deepali. Hi Deepali. Name Rachit. Hi Rachit. Hi Ragbi. Hi Priyank. Hi Malya. Nice. I need more comments, guys. Also, try to invite your friends. If you know your friend is not here and you know he wants to join, just drop them the link, send them the link. उन्हें link भेज दो, जल्दी से बुला लो, and then once we have participants number of 50, we'll start. Okay, so we'll start with the presentation. We'll learn what is AI. We'll learn more about it, but call your friends first, and then we'll start. So yeah, I have Neduman, I have Abhiram, I have Harish, Vansh, Vivan, Manish, Riyansh. Hello everyone. Hello. Good evening to all of you. Hitarth, Firoz. Hello Firoz. Hello Hitarth. Great. So we have so many participants right now, and again, yeah. So let's have some introduction to all of you. So basically, let me introduce myself. My name is Mukul Sagar, and I am basically an educator and a community manager over here at Avishkaar. I work with the community engagement part, so all of the community part, all of the projects parts. I do create a lot of projects for students. I do IOTM. If you have participated in IOTM, अगर आपने IOTM में participate करा है, तो some sort of connection is there between you and me, because I design IOTM problem statements, and there are different products which I have
worked on in Avishkar ecosystem. Similarly, there is this one new feature or one new technology which is artificial intelligence. अब बहुत टाइम से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने मूवीज में देखा है, हमने कार्टून्स में देखा है, अभी बड़ी रिसेंटली आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, most of you might have used this chat gpt. So how we are going to leverage that, how we are going to use the power of chat gpt, not exactly chat gpt, but how we can use similar technology, the ai technology, to create robotics projects or electronic projects, okay, whatever we want to create using the avishkar products, okay. So this is how we are going to move forward in this webinar, okay. So let me again go back to the comment section and tell me guys, आप में से किस किसने ए आई अभी तक यूज करा है, किसी भी एक फॉर्मेट में, हो सकता है आपने चैट जीपीटी यूज करा हो सकता है आपने कोई और टूल यूज करा हो. सो प्लीज से यस आई हैव यूज्ड ए आई. आपको ये कमेंट करना है या फिर जैसे भी आप कमेंट करना चाहते हैं बस, बट टेल मी यस और नो whether you have used AI or not. Okay, so I'll be going back to the comments, reading it out, and coming back again to you. Okay, so Harish had said yes. Krishnama said, "Can you please speak only in English?" Okay, so I'll try to speak both in English and Hindi. My last thing was I was asking you to write down in the comments whether or not you have used AI. So if you have used AI in any format in your life, just write down yes. Otherwise, write down no if you are new to this. Okay, so I have received so many comments, so many beautiful comments. Like yes, I have used AI. I have used AI. Yes, Scratch add-ons, and I have used ChatGPT, AI Signal of marketing. I have used AI. Yes, Block and Python coding. Very good. Okay. Yeah, guys, whoever has joined, जो भी नया join करा है, please write down whether or not you have used AI in your classroom, maybe in your classroom, or maybe in your projects, or maybe anywhere just for fun. Have you used AI or not? आपने AI use करा है या नहीं? So the more comments I will get, the more beneficial it will be for me, so that I can get an idea and frame my examples, frame this webinar accordingly to that. ओके, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस किस ने यूज करा हुआ है, क्या एग्जांपल्स देने हैं, वो मुझे समझ में आएगा. ठीक है. सो ऑल्सो इट विल गिव अस फ्यू मोर सेकेंड्स, फ्यू मोर मिनट्स टू गेट ऑल द न्यू participants in. Okay, so currently we are at 41 participants. Let's wait for few more minutes and then we'll start with the presentation. Okay. Very good, very good. So I've received more comments. Ishit says, I have used AI in block and Python coding. Very good. Trans Nalisar, it's a cool name. Yes, I used it in Lego to make robots. Super cool. Dr. Niti Mittal said with Avishkar Kit. Very good. And Raghav Tyagi said no. Ishit Goel said okay. Okay. So yeah, I've received your comments and now I know that most of you have used, almost 80% of the audience in this webinar have used AI in any format, in one format or another. But what we are going to learn in this webinar is how to program Avishkar products with this, how to create robots with this, and what are the new features in our AMS, and few little details about artificial intelligence in general. Okay. This was for English speaking attendees.
जो लोग हिंदी समझते हैं उनके लिए। सो हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे जिसमें सबने कहा है कि किस तरीके से वी कैन दे हैव यूज्ड एआई, किस तरीके से उन्होंने एआई यूज़ करा है। एंड अब जो इस वेबिनार में हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि आविष्कार के प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम रोबोट्स बना सकते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना सकते हैं विच विल वर्क ऑन एआई, जो एआई के साथ काम करेंगे। क्या नए मोड्स हमारे एएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर आए हैं, सम लिटिल बेसिक डिटेल्स, थोड़ी बेसिक डिटेल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। I'm going to present a screen where I'll be presenting this PPT to you. Uh, where I'll be present. So, yeah. So this is the presentation. If you all can see, let me just check on the. So Anvi, if you are listening to me, please pin the presentation so that it will be visible to everyone. Yeah, okay, got it. Thank you, Anvi. So basically what we are going to do now is understand artificial intelligence. What is artificial intelligence? First, let us understand what is the content of this webinar. हम ये 5 चीजें सीखने वाले हैं. What is artificial intelligence? A basic definition, a basic understanding. What is the importance of AI? Why should we use AI? क्या फ़ायदा है? अब इतनी सारी जगह पे हमने सुन लिया, इतने सारी बार यूज़ भी कर लिया, डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई? क्या ज़रूरत है इसकी, है ना? व्हाई इट इज़ नेसेसरी, एंड देन हाउ टू मेक प्रोजेक्ट्स विद एएमएस एआई. I will show you some videos, some projects, and which I'll be controlling with using of AI. Then how to use the OTA feature. So we have launched a new feature. आपको पहले पता होगा कि यूज टू प्रोग्रामर मेकर कोड और डिफरेंट जो भी हमारे प्रोडक्ट्स थे उनमें जब हमें कोड बर्न करना होता था, हमें प्रोग्राम बर्न करना होता था, वी यूज टू कनेक्ट इट विद यूएसबी केबल. So at that time we used to connect it with USB cable. अगर कभी USB केबल नहीं होती थी तो the program could not be uploaded. But now what we have done is we have brought up a new feature, OTA feature, जिसमें अब हम Bluetooth के help से program upload करेंगे. So there is no need to bring up a USB cable. So that is another good feature. And then at last I'll take some question and answer. Okay. So let's move ahead. The first slide is what is artificial intelligence, and as you can see over here it is written, AI is a way to make machine think and learn like human. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी हैं. एक बड़ी कॉमन मूवी है, देयर इज वन कॉमन मूवी विच वी ऑल हैव सीन, द रोबोट मूवी. एंड इन द रोबोट मूवी Professor Vasikaran actually teaches the robot Chetty how to behave like a human, what to do in certain situations, what to do if something is happening in this way, how to understand emotions and all different things. So what he was trying to do it at that time was he was trying to give some sort of intelligence to that machine. बेसिकली वो अपने रोबोट को कुछ एक समझ, कुछ एक इंटेलिजेंस, कुछ एक दिमाग देने की कोशिश करता है जिसकी वजह से जो बेसिक टास्क होते हैं, फॉर एग्जांपल एक अगर हम अपना इफ यू हैव यूज्ड आविष्कार रोबोटिक्स किट, इफ यू कैन क्रिएट अ किट व्हिच विल मूव फॉरवर्ड विद अ प्रोग्राम, तो वो चलता जाएगा, चाहे आगे पानी आए, खाई आए, पत्थर आए, आग आए, वॉट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ इट, इफ देयर इज फायर, stones, whatever is there, it will just move because it is programmed to move only forward, but it is not programmed to detect anything, right? It cannot detect if something is asking him to stop or something like that. Okay, that is a non-intelligent robot. But when we want to make our robot smarter, when we want to make our robot intelligent, then what we need to do is we need to give them some sort of brain, and we need to teach them how to learn, or either we can give them some knowledge, some data, so that they can match it with the data, the current scenario with the data they already have, and takes decision based on that. Okay, so that is what AI is, that is what artificial intelligence is. Artificial intelligence is basically एक तरीके से दिमाग
देना एक मशीन को, किस तरीके से कोई उसको समझ सकता है। एक रोबोट को अगर मुझे स्मार्टर बनाना है, एक रोबोट को इफ़ आई वांट टू मेक इट learn new different things. If it sees fire, it should stop. If it sees a open road, it should move ahead. इस तरीके की जो ऑटोमेटिक कैपेबिलिटीज हैं, इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक रोबोट जब खुद ब खुद काम करने लायक हो जाए, खुद ब खुद चलने लायक हो जाए, खुद ब खुद डिसीजन लेने लायक हो जाए, when it can take decisions based on a certain data, then we can call it a smart robot or an artificial intelligent robot. Okay, so tell me, was this point clear to you? You can write down yes or no in the comment section. Yeah, can you type yes or no? Do I need to repeat it? Okay, is my voice clear now, or is there any background in the noise currently? So, guys, I guess this place is noisy. Let me just quickly move to a different place, and let's see if it will work out for the noise. Just give me 2 seconds. My screen will be off, so I'll be shifting place for due to the voice issue, background noise issue. But just give me 2 minutes, okay? Till then, I'll leave you with the presentation. You can read whatever is there on the screen, and if you have any question related to this. Definition of artificial intelligence, you can ask, you can write down in the comment section. Okay, so just give me 2 seconds. I'll just switch the spots. Okay, so yeah, let me move forward now. So basically, this is what we did. This is what we learned. What is artificial intelligence? And most of you have written that yes, you have understood what is artificial intelligence. I hope it is clear to all of you, whether you are Hindi speaking or English speaking. अगर नहीं समझ में आया तो you can ask me again. Okay, let's move forward now. सो द नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अगर कोई वेबसाइट यूज करी है एंड समटाइम्स ऑन आविष्कार वेबसाइट itself there is a chatbot we have enabled to help you out. So you can ask question if you are facing any problem, any issue in the code, any issue in buying anything, or whatever issue it could be. A chatbot opens it up, open up automatically, and you can talk to it, and it will give you some suggestions. बड़े सारे apps में आजकल ये सारी facilities है. I guess आपने अगर if you are new age kids and students, आप शायद Snapchat यूज करते होगे. Snapchat के अंदर भी एक AI chatbot है with which you can chat and it can give you answer. Similar format is but there are smart assistant as well. For example, Google, Siri, Alexa, these all are smart assistant. You can ask them question, you can assign them task. Okay, Alexa, play this song, Google, play this song, whatever it is. So हम उनको as an assistants यूज कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा नहीं, whatever is possible digitally. For example, Alexa can place orders for you on Amazon. You just need to tell them, okay, Alexa, place order for this, something like that. E-payments, there are a lot of things in e-payments. आप पेमेंट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से. इट कैन डिटेक्ट whether payment is valid or not. Search algorithms work accordingly to that. For example, आपने अगर कभी Google यूज करा है and when you go type, let's say humanoid robot for the first time on YouTube. So आप जब पहली बार सर्च करोगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. You'll have to type in the full name humanoid robot and then it will show you the results. But the next time when you will be coming back, you will just type H and it will automatically show you the search result. That do you want to search about humanoid robots?
So that is also a form of artificial intelligence where it is collecting data from you, and then based on that data, it is giving you some. It is predicting your output or your outcome. Okay, do you want this? क्या आप ये चाहते हैं इस तरीके से? Okay, so we do this in all sort of things. For example, another example is media streaming. आप YouTube या Instagram या कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर कुछ एक वीडियोस देखते हैं, या फिर आप Netflix पे मूवीज देखते हैं. If you watch movies on Prime Video, let's say you like Iron Man movie, you like Marvel movie, and you have watched all of the Marvel movies. The next suggestion it will automatically show to you was will be the Batman movie or some superhero movie. So मूवी देखते वक्त, गाने सुनते वक्त, ये सारे जो हमें सजेशंस मिलते हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ही मिलते हैं. Okay, then we know smart cars are there, navigation apps are there, facial recognition tech is there. So basically you can open your phone with face lock. आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप को face lock enabled बना सकते हो. There are smart doors which can do that. Text editors, जैसे बड़ा प्यारा सा टूल है, there is a beautiful tool called Grammarly. You can use it to correct your grammar. There is also another similar tool which is called Quillbot, which you can use to actually improve your grammar. So whenever you are writing something, when you are writing a paragraph and you are not sure whether you have typed the right spelling, or the punctuation is right, or the grammar is correct, these AI tools can automatically read that text and then give you suggestions based on that. Okay, and again the social media feeds. आप एक तरीके के पोस्ट अगर आप देखते रहोगे अपने सोशल मीडिया में, हमें लगता है ना कि यार ये सारे मीम्स एक तरीके के क्यों आ रहे हैं, या फिर why I'm getting ads. I was searching this about this shoe on Amazon, but I'm getting ads on my Instagram. वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी डेटा कलेक्शन की हेल्प से ही होता है. ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. आज की डेट में बहुत एक्सटेंसिवली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है. ऑलमोस्ट हर एक आइटम में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हर एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट में, टीवी, एसी, फ्रिज, in some form or another there is artificial intelligence present. Okay, so is it clear? Please write yes or no. Yes, कुछ बैकग्राउंड नॉइज का इशू आ रहा था अभी भी. सो आई हैव अगेन स्विच्ड सम स्पेस, बट आई विल ट्राई. अब ना आए वो ज़्यादा शोर, बट थोड़े शोर के लिए सॉरी, प्लीज बेयर विद मी. बट टेल मी, लाइक आपको एग्जांपल समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स, हाउ इट इज यूज्ड, हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ? Okay, sir, can you explain about chatbot? Surely, I'll explain you about chatbot. Is there any question? Sir, I have a doubt about this. Please, Babita, you can ask your doubt. And based on the previous data, please ask your doubt. Write down your question in the chat section. Once I'll complete the PPT, then I'll take all of the question and answer you that. Okay. So we are done with the examples and the basic definition of artificial intelligence. Now we'll be moving on to the software, the AMS tool, where we'll be learning about few examples, how we can do that, what tools are there, how we can program different products using it. Okay, so just give me 1 second. I'll be coming back to the artificial intelligence website. Okay, sorry, there was another slide, importance of AI. I guess based on the previous slide where I was explaining you the
applications of AI in real world, in today's world, it was clear what is the importance of AI, because we need so much suggestions, we need a lot of data calculation, हमें कुछ चीज़ें predict करनी होती है. For example, uh, it's a good feature ना, जब when Netflix recommend you similar format of movies, है ना, if you like superhero movies and the Netflix is recommending you again a newer movie which is superhero movie related to the subject, related to the genre which you like and that you haven't watched, okay, so that is good. Similarly it can help business. For example, Prime video का subscription आप लेते हो या Netflix का subscription लेते हो because it shows you good movies, so it can help businesses. Similarly आप कोई अपना business open करते हो, for example, let's say you are a student but you want to create an app which will have a song which is a song player, a media player, okay, and if your app is among all the youngster, what they are going to what they love to listen is a good thing to learn from their data, because then you can actually show them better recommendation of similar songs, okay. Similarly medicine, entertainment, science, business, ये बड़े सारे ऐसे application sectors हैं. There are various application sector where it is very important right now to use AI to detect, like doctors are using it to detect cancer or different diseases which will take time फॉर अ ह्यूमन. अगर कोई एक ह्यूमन उसको काम को करेगा तो उस डेटा को कलेक्ट करने, उससे रिजल्ट्स निकालने के लिए बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. बट AI इज़ अ मशीन, इट नीड्स नो रेस्ट, इट नीड्स नो फूड, इट कैन वर्क एफर्टलेसली बड़े देर के लिए और जल्दी भी करके दे देगा, ठीक है. सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं एंड आगे आने वाले टाइम में ज़रूरत है इसकी. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ वेबिनार फॉर यू सो दैट यू कैन लर्न इट, ओके. Okay, so let's move forward. We are here on the AMS AI mode. So, be आपको screen पे you can see 4 different images. I'll be explaining all of these to you in a while. So, how we can use it, how to actually create a project out of it, what is the detection method, how we can do that. Okay, so I have this thing. I have written down the link. Avishkaar.cc AMSAI. Let me just quickly open this website and then I'll show you what we can do this, okay. So let me just quickly go to avishkar.cc first. So yeah, what you need to do is you need to just come to the avishkar.cc website, and on the AMS tab, on the first you will have to log in. I'm already logged in, so you need to log in. You don't see the AMS tab directly, you will see a sign up button, sign in button. Once you sign in, you this button will change to AMS. जब आप sign in कर लेते हैं तो ये button change हो जाएगा AMS में, okay. So then you click on AMS. Once you click on AMS, there are 2 modes of AMS. One is AMS Classic. You are familiar with this logo, the orange black logo. ये हम सब use करते आए हैं, whether it's our IRC or whatever it is. And then we have this AMS AI. This is the newer mode, brilliant color pattern. यहाँ पर हम देख सकते हैं नया सा, और it is also written the new and improved AMS for BLE enabled. Okay, so this is how we will actually use it. So click on this and then come here. So let me see. So you don't need to download. I have received a comment how to download from Roomkey. You don't need to download. Actually, you cannot download this mode. You can only use it online. Yes, very good question. Thank you. So for everyone, this is an online mode. We cannot download this AMS AI mode. It can only be used online in your Chrome based browsers. Okay, so आपके पास अगर आप Mozilla यूज करते हो, अगर आप ये Chrome यूज करते हो तो it will run. Okay, on Apple as well it will work in few browsers, but आपको Chromium based browsers use करने हैं. So that is how you will do it. Okay, so you have to select the AMS AI option. Once you select that, अब आपके पास बड़े सारे options आ जाते हैं. Code with Python, code with Avishkar hardware, and code with artificial intelligence. So I will be explaining you each of them.
देयर इज वन बेसिक कोड विद आविष्कार हार्डवेयर. सो इसमें क्या होगा बेसिकली, हम अपने प्रोडक्ट्स को जो नॉर्मल हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे फुल 2.0, ब्रेन मेकर 2.0, मेकर बोर्ड 2.0, इनको प्रोग्राम करने के लिए मोड है हमारे पास, वेयर वी विल बी लर्निंग अबाउट द ब्लूटूथ मैकेनिज्म, द BLE मैकेनिज्म जो मैं आपको इनिशियली बता रहा था, द मैकेनिज्म विद विच यू कैन अपलोड द कोड यूजिंग द OTA. आपको USB केबल की जरूरत नहीं, आप ब्लूटूथ से कोड अपलोड करेंगे, वो हम इससे करेंगे. Similarly, we have this code with artificial intelligence. So when we want to use AI mode, when we want to use some image based recognition, किस तरीके से डेटा से सीख के जेस्चर्स कंट्रोलिंग एंड ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मोड में होगी. एंड देन देयर इज अ थर्ड मोड विद कोड विद पाइथन, विच इज अ न्यूअर मोड वेयर यू कैन राइट द codes in Python, similar code, not for hardware, but some basic code where you can test your Python skills or learn about Python language. Okay, so I'm going to use this code with artificial intelligence. I'll click on it, and there are few different boards again. These all are compatible with it. So I'll just first select Makerboard 2.0 because it have a simulator in it. So first we'll simulate it and then we'll test it on the actual Makerboard. Okay. So yeah, this is the. Let me come back to this. So yeah, so this is the AMS AI mode, and I can create a new project. I'm already in new project. So first of all, what we need to do is हमें सबसे पहले एक AI मॉडल बनाना होगा. What is a model? So basically जो डेटा होता है, जिस डेटा के ऊपर हमारा जो ब्रेन होगा, जो प्रोग्राम होगा, जो कोड होगा, वो काम करेगा, उस डेटा को, वो डेटा जो होता है वो डेटा हो सकता है पिक्चर्स की फॉर्मेट में हो, यहाँ पर पिक्चर्स की फॉर्मेट में होगा, बट हो सकता है वो किसी और, जब आप कोई और टूल यूज़ करेंगे AI का, वहाँ हो सकता है वो ऑडियो की फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो. सो बेसिकली जो यहाँ पर मॉडल है वो बेसिकली हम जो डेटा प्रोवाइड करेंगे उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, देन उस डेटा के अंदर भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, वो भी हम जानेंगे. सो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें इस मॉडल को कन्फिगर करना पड़ेगा. हाउ टू कन्फिगर इट? यू कैन सी देयर इज अ बिग बटन ओवर हियर right below my screen. So configure AI model पे मैं क्लिक करूंगा. जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, I have all these 4 options: images, hand pose, pose net and face mesh. Okay, ये क्या है, 4 मोड क्या है, क्या क्या डिटेक्ट करते हैं, इनके बारे में समझेंगे. What are all these 4 modes? The first mode can detect images, it can take pictures, and it can take decision based on that. So basically what you can show it, you can upload images or you can basically show it, and then it can differentiate between whatever the image you are showing, is it correct, and sorry, like that. Then the next one is hand pose. So gesture tracking, gesture आपने बहुत सारी you might have seen projects where someone is controlling a car with just the gestures, like this to stop, this to move, or whatever. So whatever gesture, whatever pose of your hand you can make, you can actually use this hand pose, uh, 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 the mode, hand pose mode of AI. Okay, then the next is PoseNet. In PoseNet, the how you are actually having your body in front of the camera. आप कोई भी एक शेप बना सकते हो, आप अपने हाथों को कैसे रखा हुआ आपने, आपके शोल्डर्स कहाँ पर है, आप बेंड हो नहीं हो, इज योर आर यू सिटिंग अप स्ट्रेट या लेटे हो, ये पॉजनेट के काम है जब आप पूरी बॉडी का आपका ट्रैकिंग होता है. एंड व्हेन यू वांट टू जस्ट ट्रैक योर फेस, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेस लेफ्ट या राइट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी फेशियल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई द हैंड पोज. So we'll go to hand pose, and then it will ask us a name for our model. Okay, so I'll just write down AI webinar. AI webinar, एंड मैंने मॉडल का नाम दे दिया है. सो द मॉडल जो पूरा का पूरा डेटा होगा जिसको हम बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं, विच विल एक्चुअली हैव ऑल द फाइल्स, इज AI वेबिनार. अब उसके अंदर मुझे कुछ लेबल्स बनाने होंगे क्योंकि मुझे अलग अलग जेस्चर्स चाहिए. आई वॉन्ट डिफरेंट जेस्चर्स टू कंट्रोल डिफरेंट थिंग्स, टू शो डिफरेंट आउटपुट्स. सो दैट्स वाई आई नीड डिफरेंट लेबल्स. ओके, सो आई विल शो palm, I will show thumbs up, I'll show fist, different thing. Okay, so first of all I'll create a label called fist. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अगर अभी देख सकते हो तो मैंने अपना हाथ इसके आगे, कैमरा के आगे ला रहा हूँ, एंड इसने कुछ डॉट्स लाइंस यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट इज ट्रैकिंग माई हैंड. दिस इज द AI, दिस इज द डेटा द कैमरा इज गेटिंग. तो जो AMS सॉफ्टवेयर है वो इस डेटा को लेके इस डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, एंड इट इज
actually knowing how many fingers I'm having, how many bend points I can have, okay, in my finger. So you can see I can bend my finger from 3 different points, actually 4 different points. So उसने 4 points बना दिए. Similarly in my thumb. Okay, so if you can see, you can if you're watching, I hope you are watching the video in the full screen on your phone or in your laptop, so you can see all these lines and dots on my hand. Okay, so what I need to do is right now is I have two options. Either I can collect images or video. So I'll choose the video mode. I'll explain you about those. If I do image, it will take one image, but I'll select video. So what I'll do is I'll show my hand. So I have given it a name fist. So I'll show it a fist, and then I'll keep press the button start recording. So it will start recording now, and as you can see, it is recording pictures for 6 seconds. So I'll move my hand again. I will start recording. The more data I will give, the more better it will be. Okay, so you can see I have given it 110 images. Okay, so ये इसको डेटा मिल गया. अब दूसरा लेवल बनाने की बारी आती है. Now we'll create the second level, which is the palm. Now I'll just keep my hand open and record it. So you can see again I'm recording it from every angle, and it is detecting my hand. Okay, again I'll start recording. आई नीड टू कीप माई हैंड ओपन, डोंट कंफ्यूज इट. आप अगर मिक्स एंड मैच कर दोगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या करा था, सिर्फ हमने फिस्ट बनाया था. अभी हमने पाम को ओपन रखा है, हाथ को ओपन रखा है. ठीक है, कोई और तीसरा जेस्चर, जैसे एक और जेस्चर बना लेता हूँ मैं, एक और लेवल. टिक मार्क शो करूँगा मैं. मार्क होता है या जो टिक, आई कॉल इट टिक. दिस वन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड देन आई जस्ट रिकॉर्ड इट. So I'll again record. मैं 2 बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा मैं दूंगा अपने AI मोड को, उतना बेटर वो रिएक्ट करेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई हैव प्रोवाइडेड इट डेटा. अब मैंने 3 लेबल्स प्रोवाइड कर दिए इसको, एंड अगर मैं दूसरा हाथ भी लाता हूँ, यू कैन सी दिस इज डिटेक्टिंग बट नॉट रिकॉर्डिंग. ओके, सो मुझे 3 तरीके का डेटा मुझे मिल गया है, फिस्ट, पाम और टिक. लेट्स ट्रेन आवर मॉडल एंड देन टेस्ट इट. Okay, so I have received the comment, sir. You can also do thumbs up. Very good, Ishit. We'll do a thumbs up right after it. जो next example होगा हम उसमें बिल्कुल thumbs up वाला करेंगे. But let's first check this. Okay, test it. Okay, data set of all labels process. Let's now test it. Okay, so currently I'm not showing anything, and you can see face palm tick में से कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे. कोई परसेंटेज, कोई कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज बेसिकली हाउ मच इट इज डिटेक्टिंग वॉट एवर यू आर शोइंग. ओके, सो लेट अस शो द फिस्ट फर्स्ट. जैसे मैंने फिस्ट दिखाया, उसने 100% कॉन्फिडेंस दिखा दिया दैट दिस इज अ फिस्ट. जो मैंने उसको डेटा दिया था, देखो मैं कहीं पे भी रखूंगा ये फिस्ट दिखाएगा. ओके, समटाइम इट गेट्स कंफ्यूज्ड बट या. देन आई विल शो द पाम. So now the palm is there, and you can see on this window I'm getting 100% on the palm, whether I'm keeping it like this. ठीक है, ओके. बट मैं अगर दूसरा हाथ दिखाता हूँ तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मैंने इस हाथ का डेटा दिया था, इस हाथ का नहीं दिया था. ठीक है, इस हाथ के डेटा पे गलत हो जाएगा. सो यू नीड टू मेक श्योर जिस हाथ का डेटा आपने दिया था, वॉट एवर डेटा यू हैव प्रोवाइडेड अर्लियर, इट विल ओनली डिटेक्ट दैट डेटा, not another data. Okay, because it is still learning, you'll have to provide more data for different labels. Okay, so this is how palm and then tick. So you can see when I folded my fingers and I showed it a check mark, it is now detecting tick 100%. Okay, so you can see palm ले लेता है. जब मैं उल्टा कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, but yes, this is how I was recording it, and wherever I will place it, it will take tick as 100%. Okay, so मॉडल भी टेस्ट हो गया.
सो आई कैन डाउनलोड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये रीज़न क्या है, जब मैं कभी दोबारा इस मॉडल को यूज़ करना चाहूँगा, मैं दोबारा इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा तो ये डेटा यहाँ पर नहीं रहेगा ड्यू टू प्रिवेसी रीजंस। ओके, क्योंकि बड़ी सारी पिक्चर्स हैं, सो वी कैन नॉट कीप दैट डेटा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यू नीड टू डाउनलोड दैट मॉडल। ओके, क्या था हमारे मॉडल का नाम? ए आई वेबिनार। यू कैन कीप एनी नेम। ओके, सो आई क्लिक ऑन डाउनलोड and it is downloaded. So I'll just close it and now I'll create the program. What program I'll create? I will use the gestures. जो भी gestures थे उनके जो भी लेबल आ रहे थे, अगर वो लेबल मैच कर जाते हैं तो it will show different images on my simulator. Okay, so first I'll go to control, I'll place this and I'll place a loop, an AI label, again if, I'll add some else if, so yeah, first was, क्या था हमारे फर्स्ट लेबल का नाम? It was frisk. Okay. Then next and next arm, and the third one was, so once this is done, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर बना ली हैं। तो मुझे करना क्या है, जब फिस्ट होगा तो मैं एक पैटर्न दिखाऊंगा। when it will be palm, I will show another pattern. On tick I will show another, and on else I will show something else. Okay, so I'll go to display, I'll pick up this show pattern block, uh, duplicate, 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 duplicate. Okay, so for fist I'll select the snake pattern, just like I'm fighting to someone, so it will be the snake. If I'm showing, this is also a symbol of peace or high, so I'll show the heart pattern on the palm. On tick I'll actually show the tick mark. Okay, and on the else I can actually show a different pattern, maybe a aeroplane or a duck or whatever it is. Okay, so our program is ready, very simple program. Let's play it. So how would I play it? I'll just move down and play. Okay, so just make sure you are looking at, let me just first increase the size so that you can actually okay, let me just थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं इसको. ओके, या सो आई होप मेकर बोर्ड इज विजिबल टू यू. आपको जो सबसे बॉटम राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा वो हमारा मेकर बोर्ड है. एंड देन आई विल प्ले एंड आई विल शो डिफरेंट जेस्चर्स टू इट एंड विल सी कि सही से डिटेक्ट करके वहाँ पर पैटर्न्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, वेदर इट इज वर्किंग करेक्टली और नॉट. ओके, सो palm, if I'm showing palm, a heart is there, heart pattern. If I'm showing fist, a snake pattern is there. And if I'm showing tick mark, the tick pattern is there. Yes, it is working. Okay, palm, fist, and tick. Palm, fist, and tick. Okay, so you can see it is detecting my gestures, and based on that, based on the code we have made, whatever the label it is getting, whatever the label it is detecting, fist, palm or tick, it is displaying different images, it is displaying different patterns. Okay, so that is how we can use the AI. Okay, so this is the simulator. Let us check an example now. I'll play a video where I have recorded a video earlier. I'll also show you how to do it, where I was doing the same thing but on the maker board, the actual maker board. Okay, so I did the same thing but on the maker board. So let me just quickly pick up that video and play it out for you. Share this tab. Okay, so I'm sharing a new tab. Let's see if you can see. uh,
Okay, so yeah, I'll just play this video now, and let's see if you all can see this. Yeah. So currently you can see I'm holding a maker board in my hand. It is showing some pattern. When I show the tick mark, it is showing the tick mark on the actual maker board. And when I'm using my fist, it is showing the just some difference in program is that I have changed the pattern from palm to fist. But yeah, it is actually following. You can see the program on the screen and the outcome on the right hand side. ओके, सो आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन, मेकर बोर्ड में किस तरीके से करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे? आई विल शो यू, आई विल टेल यू दैट कैसे होगा, हाउ टू बर्न इट। यस, बिल्कुल, आई विल टेल यू दैट। ओके, so stop sharing. Okay, so I'll be coming back to my screen जहाँ पर अभी सिर्फ मैं आपको दिखूंगा थोड़ी देर के लिए, and I'll be telling you how to do that on a maker board. How do you can connect your hardware, जो आपके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास मेकर बोर्ड हैं, उनको आप कैसे एआई से कंट्रोल करोगे। ठीक है, उसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ मेकर बोर्ड 2.0। एक तो आपको फर्मवेयर अपलोड करना पड़ेगा, आपको फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट एज वेल, जिसकी जिसकी हेल्प से आप OTA एनेबल कर पाओगे। फर्मवेयर, वंस द फर्मवेयर इज अपलोडेड, फर्मवेयर इज अपडेटेड। व्हाट इज फर्मवेयर? जो उसके अंदर एक कोड ऑलरेडी डल के आया है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल वर्किंग वाला कोड है जिसकी हेल्प से वो ऑन होता है, ये सारी चीज़ें वो हमें अपडेट करना है। वो अपडेट जैसे ही हो जाएगा, वी विल बी एबल टू कनेक्टेड थ्रू अर ब्लूटूथ एंड सेंड सम डेटा। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, हम डायरेक्टली इस कोड को बर्न नहीं कर पाएंगे मेकर बोर्ड में। एक देयर इज अ मैकेनिज्म टू डू दैट। हम अपने मेकर बोर्ड में कोड अपलोड करेंगे जहां पर इफ वी आर गेटिंग सम डेटा थ्रू ब्लूटूथ, उस डेटा की हेल्प से हम कुछ पैटर्न्स डिस्प्ले करेंगे। आई विल बी शोइंग यू दैट कोड इन अ व्हाइल। एंड देन ऑन दी AMS AI मोड, वहाँ पर हम जैसे ही कोई पैटर्न, कोई जेस्चर डिटेक्ट करते हैं, विल बी सेंडिंग आउट सम डेटा। ठीक है, तो हमारा जो AMS AI मोड है, इट विल बी सेंडिंग आउट डेटा थ्रू ब्लूटूथ। एंड जो हमारा एक्चुअल मेकर बोर्ड है, इट विल बी रिसीविंग दैट डेटा इन फॉर्मेट ऑफ, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज अप टू यू, व्हाट आर यू सेंडिंग। एंड उस बेस्ड ऑन दैट it is actually working. So I'm going to present my screen and I'll show you. So this is the code. Yeah, uh, sorry, let me just share this tab. Okay, this is the code. If you can see, this is a normal mode, this is not AI mode. Okay, you can see what I have created is, आप लोग screenshot भी लेके रख सकते हैं इस कोड का। if you want, please take a screenshot so that you can easily recall to it. Okay, आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी बड़ा सिंपल सा कोड है। we'll try to add it in the in as an example program. हम कोशिश करेंगे, या फिर विल ट्राई टू प्रोवाइड इट, अदरवाइज दिस वीडियो इज ऑलवेज देयर ऑन यूट्यूब। सो व्हाट you need to do is, you need to quickly understand this, that we have created a program where the Bluetooth communication is happening and Bluetooth is already on. So if the data is available, we will be receiving some data in string format, text format. वो टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होगा, बेस्ड ऑन दैट वी आर शोइंग डिफरेंट पैटर्न्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, एंड देन आई विल बी शोइंग यू। ठीक है, एंड देन विल लर्न हाउ टू एक्चुअली अपलोड योर, अपडेट योर फर्मवेयर। Okay, so I hope you all have taken the screenshot of this. So let me just come to this now, and या सो लेट मी जस्ट ओपन। ओके, मैं इसी में ही चेंज करके बता देता हूँ आपको होगा क्या। अब वहाँ पर तो हमने देख लिया, वहाँ पर वी व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज, इट इज रिसीविंग सम कैरेक्टर्स ABC, टेक्स्ट, इट इज रिसीविंग सम टेक्स्ट ABC, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज शोइंग सम इमेजेस। यहाँ पर हमने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये पैटर्न्स दिखाने का। तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट नीड टू मेक वन मोर चेंज। आई विल जस्ट सेंड द सेम डेटा। ठीक है, तो सेंड टेक्स्ट A, आई विल डुप्लीकेट इट, send text B,
Then duplicate, send text C. And if you want some other text, you can also actually add it in the else section. Okay, B. So simple सा program है. अब होगा क्या? Whenever it will detect tick, fist or palm, it will send all these data. ठीक है, based on whatever the value is, whatever it is detecting. But when it will send, when it will be connected to our maker board. Okay, अब how it will connect to our maker board already. So I am having a maker board 2.0. I don't know if you guys can see, but I have maker board 2.0. Okay, the screen is मेरे ख्याल से flipped है. The screen is flipped, but MakerBoard 2.0. So you need to have a MakerBoard 2.0 with this silver controller. आपको ऐसा दिखने वाला कंट्रोलर आपका मेकर बोर्ड होना चाहिए आपके पास. ओके, वंस यू हैव दैट, यू कैन update the firmware. How to update the firmware? So once I'll be coming back to share this tab. I'll be just creating a new program, code with Avishkar hardware. Okay, so yeah, let's go to new program, then code with Avishkar hardware, select MakerBoard 2.0. Once you select that, आप जब एक बार इसको सेलेक्ट कर लोगे तो व्हाट आपको क्या करना है, आपके पास अगर ये फर्मवेयर अपडेटेड नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कनेक्ट योर मेकर बोर्ड. Let me just stop sharing for a while. You just need to connect your maker board through the USB cable. इसके लिए सबसे फर्स्ट टाइम आपको ये USB केबल लगाना ही पड़ेगा. Let me just okay, so first in the first time you need to have this USB cable. आपको USB केबल कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर दैट once the firmware is uploaded, then we don't need the USB cable to burn the code. Okay, so I'll be again sharing my screen. Yeah, so I went to the new project, code with Avishkar hardware, and then inside MakerBoard 2.0 mode I have this thing जहाँ पर हमारे पास ये फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस फर्मवेयर अपडेट and then it will give me a screen, connect your Avishkar hardware via USB to PC. हमें USB चाहिए ही चाहिए. Then I'll just click on connect, and once I'm connecting it, I don't know if you can see this. Let me just first stop sharing and share my entire screen so that you can see. Let me go back. Entire screen. सो एक विंडो ओपन होगी यहाँ पर, रीट्राई. सो हाँ, एक विंडो ओपन हो गई है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं avishkar.com.cc wants to connect to a serial port. Serial port is your USB cable port जहाँ पर आपने कनेक्ट करा है. So my computer is detecting it as a COM6 port. I'll select it and then I'll click on connect. Once I'll do that, firmware is already updated. Okay, so I have already updated the firmware in this maker board. That's why it is showing the firmware is already updated with the latest version. So it is detecting actually. Okay, but आपने अगर नहीं करा तो it will give you some 2-3 steps. Next. Okay, and then you don't need to move your maker board so much. अगर वो कनेक्शन ब्रेक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, सो एक स्टेबल स्पेस पे आप रख देंगे उसको, and then it will upload the new firmware into your board. Okay, once that is done, everything will be smooth and you can upload code via Bluetooth. ठीक है, so once that is done, and then you can connect your Bluetooth to your AMS AI mode. And यहाँ से देखिए, अभी I have this. I'll just let me just share my screen. Okay, yeah, so this is the screen, and now I'll just I'll first save it with the name webinar project. सेव करने के बाद माई BLE कनेक्ट ऑप्शन इज एनेबल्ड नाउ. एक ब्लू कलर का सेमी ब्लू कलर का सी ग्रीन टाइप का एक आइकन है, स्काई ब्लू. I will click on BLE connect and you can see I hope you cannot see right now. Just give me 1 second. Again, I need to share entire screen first. तब आप देख पाओगे. Let me, yeah. Okay, so once I am into this AMS and then I'll click on BLE connect, and then you can see now it is not detecting as a USB cable. I have connected it to my laptop, but
I can connect it to different power source. मेरा maker board में power होनी चाहिए. Once I have that, then it can be connected as a Bluetooth. So I'll just connect it to my laptop only for now, and then I'll just connect it through Bluetooth. Okay, so I'll click on pair. Once it is paired, my this is paired, and then it can start sending data. So let me just check if it is still yeah. So see, it is working. Based on the last program, it is working. Okay. So I'll just do one thing. uh, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, मैं ये वैल्यू चेंज कर दूंगा बस, एंड देन आई जस्ट सेव इट एंड प्ले इट. सो अब ये टिक मार्क पे टिक दिखा रहा है, पाम पे. अच्छा, अगेन वहाँ पर अभी हमने नहीं चेंज करा, नो इशू. सो पाम पे ये मुझे स्नेक दिखा रहा है, एंड फिस्ट पे दिस इज शोइंग अ हार्ट. Okay, so yeah, see, this is how you can connect it, and this is how you can program your maker board. अब आप इससे सर्वो ड्राइव करवाना चाहते हैं, डिफरेंट मोड्स आते हैं, तो जो भी आप कराना चाहते हैं करा सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज वन मोड which I told you about. Next mode is again there are several different modes. So code with Avishkar, code with maker board 2.0, configure model. Let's try face mesh. Okay, so the previous data is already there. Let me just create a new data first of all. Yeah. Okay, so label face track. Okay, face left. First I'll name it as face left. You can see now the lines and the dots and the polygons are on my face, and you can see how I'm talking. It is actually detecting that my lips motion, my left and right eyes, whether I'm moving left or right, it is already detecting that. Okay, so that is how you can actually create different models. It's not necessary that आपको हाथ से ही करना है. ठीक है, it's not necessary you'll have to do it with hand only. You can use your face, you can use your body, you can use your hands or images, whatever you want to do. Okay. Okay, so yeah, guys, this was all about AMS and OTA and whatever the new features we have launched. So I'll be coming back to my screen, and then I'll be taking on some questions. Okay, so stop presenting. Now you can ask me some questions. Okay. Okay, I have already some questions. Have some questions. So yes, you can provide all project code. The project code is already in there. There in this video, so you can take a screenshot, whatever I have created, and then try to create the same project first, and then you'll get the idea. Okay. This was for Firoz and everyone with the same question. How to burn it? I told you. Use for laptop camera. Yes, you have to use a laptop camera. If you don't have a laptop camera, you need to use a webcam. Okay, for your desktop. Is this new on Avishkar? Because I have not seen it before. Yes, Riyansh, this is very new on Avishkar. That's why this webinar is for you, to tell you about this AI mode. I don't have MakerBoard. No issue. You can just go to Amazon, Flipkart, or our Avishkar website, and you can purchase a MakerBoard. It's a super cool thing. Then how to burn on full 2.0 BLE with the same method. You will just upload the code, update the firmware first by connecting it to the, if you have 2.0 BLE, update the firmware, then you can upload it through Bluetooth. Okay. Not able to find hand pose in our AMS AI. I don't know if you are using the correct mode or not, but please check. There will be a hand option where you can find the hand pose. Sir, is this step same for all models of brain? Yes, the AI steps are same for all model of brain. Okay, just the programming part can be different, but how to create your own model, how to label them, how to collect data, how to create pictures, everything is same. ठीक है, बस जो प्रोग्राम आप बनाओगे, वट एवर प्रोग्राम यू विल बी क्रिएटिंग विल बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोबोट मूव करवाना चाहते हो तो डिस्प्ले वाले ब्लॉक्स नहीं लगेंगे, वहां पर मोटर ब्लॉक्स लगेंगे. ठीक है. Sir, how to supply for MakerBoard? You can use battery to power supply for MakerBoard, or you can use the USB cable with a power bank. Uh, can you tell the link? Sure, I'll tell you the link. I'll just write. I'll show it. I'll show it to you. Just give me 1 second. You can then actually.
If you can actually, let me just, you can take a screenshot of this so that you can come back again to this. Let me just share my screen. Yeah. Okay. So this is the link, how to use webcam for AMS AI. It is already enabled for you. If it is not enabled, it will ask for permission and you will allow it. Is it possible to share some cool examples with us with coding to give us a bit of more confidence to use it? Harish, Mr. Harish has this question. Yes, we will be uploading some new projects based on this on our project page on Avishkar website and on the YouTube channel. So from there you can actually check out more examples. Also, I would request everyone in this webinar, do try the same example. Just go through this webinar again, try the same examples, record the video and post it on that project so that you will be understanding it. Plus, I will convey this to our team. I'll be creating more AI projects for you guys. Also, I'll be asking everyone in my team to upload more AI projects so that you can get more confidence in this. Manish has a question. So the main brain where the data got stored, or we need to put the data first to perform. First of all, you need to create that model in your computer. Okay, जब तक वो नहीं create होगा तब तक वो नहीं चलेगा. Uh, Hello, I missed some portion of the webinar, so how can I see this video? We will be uploading this video after this. Will be just ending up in 5 to 10 minutes. After this, it will be easily available on our Avishkar YouTube channel. Then you can rewatch it. Okay. What is the purpose of using maker board? So maker board is a microcontroller board which has certain GPIO pins, LED matrix, buzzer, some buttons. So you can control several different things with it. You can control servo motors, you can control LEDs, you can take sensor data. It's like Arduino, but you have block programming for this. Okay. Sir, it is to update the sir is to update the intercode of the brain, same for, yes, to update the firmware. Update the firmware for all brain is same. Okay, so just go to the same mode. Let's say आप full 2.0 brain को use करना चाहते हो, आप go to that mode, click on that button on the right hand corner where it is saying updating firmware, update firmware, and then you are good to go. Sir, I'm creating a new project, human follower robot for use for AI. Yes, you can do that. Very good. Sir, is it necessary to buy the whole kit for the maker board? So there are different bundles, Pranjal. It's up to you which one do you want to use, but it's better, always better if you buy it with all the necessary items so that you can create beautiful projects. Okay. Manish, our microcontroller is the main part. Yes, the microcontroller is the main part. Okay. Okay. So thank you all of you. We have crossed our time limit for this webinar. I would ask you to create this some more beautiful projects and share that on our Avishkar projects platform. We'll be rolling out some competition maybe in future रिलेटेड टू एआई मोड. ओके, बहुत ही एक्साइटिंग मोड है, आप सबने देखा. ठीक है, बिल्कुल जेस्चर से आप कंट्रोल कर सकते हो. मैंने इमेजेस दिखाई. यू कैन क्रिएट, यू कैन आस्क अ रोबोट टू स्टॉप व्हेन यू शो दिस और मे बी प्ले ऑन दिस, मूव ऑन this left, this right, whatever you want to do, that's up to you. So create some projects. If you don't have if you face any issue, you can reach out to our team through support@avishkar.cc. ओके, आप आविष्कार के इसी वेबिनार पे अगर आप, जब हम अपलोड करेंगे, अगर आपको कोई भी इशू आएगा तो यू कैन कमेंट ऑन द सेम वीडियो आफ्टर दैट, सो दैट और आप आविष्कार के ईमेल सपोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है. विल बी ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. ओके. Okay. Okay, everyone. So thank you for joining me. Thank you for joining us on this webinar. I hope you liked it. Please keep asking questions and keep creating cool products with it. Okay. So few videos are there on our YouTube channel, which I forgot to play on in this webinar due to time issue. But yeah, you can go and watch those videos. We have also uploaded few new videos for MakerBoard projects for where with some crafts. So that are some cool projects. Go to our Avishkar projects page. Go to our YouTube channel. Subscribe it if you haven't subscribed.
लाइक ऑल द वीडियोस, कमेंट। आपको अगर कुछ भी इशू आ रहा है कि ये कोड समझ में नहीं आ रहा है, ये पार्ट कैसे करना है, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट वी कैन गेट द फीडबैक एंड देन वी कैन improve it in the next videos or in the next webinar. Okay, so bye bye everyone. Thank you for joining in. Take care.